students. How are you? I hope you all are fine. Today we will start with the topic Nutrition in Plants presented by me, Rajlakshmi Shaha. So let us introduce you with the topic. In order to perform various vital functions of a body, living organism needs some energy. Living things or organism, they are the basic characteristics. So that means they are differentiated from non-living, living and non-living. So these characteristics, you can say a life process or you can say a life characteristics. Some of the life characteristics are nutrition, respiration, growth. Means you understood that nutrition is need of the body. Organism need energy so that they can live and grow. And how they will get the energy? If they have the food. So what is the food then? Food means the substance which is broken down by the chemical process that is going on in their body of an organism. They give energy, and that is called as what? Food. Now, what is the nutrition? The process by which food is taken by an organism and used by its body. जो फूड हम खाते हैं और हमारा बॉडी जिस फूड को यूज़ करता है सो दैट वी कैन गेट एनर्जी, वी कैन गेट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब प्रॉपर वे में हमारे बॉडी में जाएगा. सो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? न्यूट्रिशन. There are two mode of nutrition. One is autotrophic and another is heterotrophic. Autotrophic means, autotrophic का मतलब ये है कि जो plants जैसे कि green plant जो अपना खाना खुद बना सकते हैं through their own process, that is the photosynthesis. So that mode of nutrition which can make their own food, that is called as autotrophic nutrition. Heterotrophic which do not make their own food, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, and they depend on the other organism for their food. So that mode of nutrition is called as what? Heterotrophic nutrition. Now let us see this activity to show that green parts of a plant can photosynthesize. मैंने ग्रीन प्लांट जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो ग्रीन क्यों होते हैं? सो व्हाट यू नीड? अ लीफ विथ टू कलर्स. ओके, अ बीकर, एक बीकर चाहिए जिसमें हम पानी डालेंगे. एक बर्नर चाहिए जिससे हम पानी को गर्म करेंगे. वी नीड टेस्ट ट्यूब, वाटर, अल्कोहल, और क्या चाहिए हमको? आयोडीन सोल्यूशन चाहिए. ओके, सो इन दिस मेथड व्हाट यू विल डू, यू विल प्लेस द बीकर. आप बीकर को रखोगे और उसको 3/4 पानी से भर दोगे एंड यू बॉयल द वाटर and place the leaf in this water for about 2 minutes to soften the leaf, जब तक थोड़ा सा नरम नहीं हो जाता है. Then take the leaf out and put it in the test tube, और टेस्ट ट्यूब में आप उसके बाद डाल दो. ओके, देन उसके बाद about 3/4 full of alcohol. Okay, now place this test tube in a very hot water for about 10 minutes. hot water में 10 minutes के लिए आप रख दो. As the alcohol warms up, it will remove the chlorophyll. तो उसमें जो वो ग्रीन पिगमेंट था, जैसे ही पानी गर्म होने लगेगा, ग्रीन पिगमेंट जो उसमें से था वो हट जाएगा और उसका कलर लेस हो जाएगा. सो टेक द लीफ आउट एंड ऐड 4 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन. अभी क्या करना है? आप लीफ को बाहर निकालो और उसमें से आयोडीन सोल्यूशन डालो. सो व्हाट यू विल सी आफ्टर एडिंग दिस आयोडीन सोल्यूशन, द कलरलेस पोर्शन शोज नो चेंज. उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. लेकिन ग्रीन पोर्शन में क्या कलर हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा. दैट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट ओनली इन द ग्रीन पार्ट. स्टार्च प्रेजेंट है ग्रीन पार्ट्स में. स्टार्च जहाँ से वो खाना बना सकते हैं, उसका ग्रीन पार्ट. ओके, सो दैट मच इज प्रेजेंट ऑन द लीफ, ग्रीन पार्ट. Thus, green part of the leaves contain what? Chlorophyll, and it can photosynthesize and it can make the food. तो इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आता है कि दैट ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कैन ओनली फोटोसिंथेसाइज, मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड. अगर उसका कलर चेंज हो जाता है दैट मीन्स उतना जो पार्ट है उसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है. To demonstrate that light is necessary for photosynthesis. Requirements: potted plant,
petri dish, boiling tube, alcohol 70%, iodine solution, Bunsen burner, forceps, beaker, water, dropper, black paper. Procedure: take a healthy potted plant and place it in dark for about 72 hours so that the leaves become free from starch. After 72 hours, select a leaf on the plant and cover a portion of it on both sides with black paper. Keep the potted plant with the covered leaf in sunlight for a few hours. After a few hours, detach the covered leaf from the plant and remove the black papers. Boil the leaf in water for a few minutes. Now boil the leaf in alcohol in a water bath till it becomes dull white due to the removal of chlorophyll. Wash the leaf with water and add iodine solution. Observation: the portion of leaf which was covered does not change color, whereas the portion which was uncovered turns blue-black. Inference and conclusion: the portion of leaf which was not covered received all the factors necessary for photosynthesis. Therefore, that part could only photosynthesize, whereas the one which was covered could not manufacture food. The presence of starch gave the positive test with iodine, that is, turned to blue-black color. Photosynthesis is the process of manufacturing of food by the green parts of the plant, especially the leaves, in the presence of sunlight and chlorophyll, with the help of carbon dioxide and water. The term photosynthesis means the photosynthesis was coined by or told by Charles Reid Barons. And here plants take what? Plants क्या लेते हैं? It takes carbon dioxide from the atmosphere. हमारे वातावरण से वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. वाटर लेते हैं कहाँ से? सॉइल से, मिट्टी से. And it reacts with what? Water reacts with carbon dioxide. उसके बाद और क्या रहता है? लाइट, दैट इज द सनलाइट रहता है, एंड क्लोरोफिल to produce the sugar, so that they can produce sugar and carbon and oxygen into their body. So sugar जो produce होता है, that is stored in the form of what? That is stored in the form of a starch in various parts of the plant, and they release what? Oxygen. Means carbon dioxide is taken by the green plant and oxygen is released by the green plant, and water is taken from the soil by the root, that is in presence of sunlight, so that they can make sugar. The reaction that takes place during the photosynthesis is can be written as like a reaction equation के जैसे हम लिख सकते हैं. That means carbon dioxide when added with water in presence of what? Sunlight के present में and chlorophyll के present में, what we will get? We will get sugar plus oxygen. So that means what is a photosynthesis? It is a process of using the energy of light. Light का energy लेते हैं to convert water एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर सके किसमें? शुगर में और ऑक्सीजन में. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फोटोसिंथेसिस.
Now, what are the condition necessary for photosynthesis? The condition that needed for photosynthesis is the presence of green pigment, that is chlorophyll. Green pigment उसमें होना चाहिए. Pigment का मतलब क्या है? Naturally occurring substance of a plant, the color of the plant, जो कि green है, और a animal, जो कि जिसका जो कलर है जो नेचर से मिलता है, that is the pigment color. The presence of light, light होना चाहिए photosynthesis के लिए. थर्ड थिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए. तो कंडीशंस में ये चार होना चाहिए. पिगमेंट दैट इज़ द कलर, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन है, लाइट होना चाहिए दैट इज़ द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है, और वाटर होना चाहिए. Now one by one now we will analyze the parts of the leaf. तो इनसाइड ऑफ द लीफ क्या होता है? ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये लीफ के अंदर होता है, ठीक है. तो एक पार्ट लीफ का हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है. सो दिस पार्ट इज इनसाइड द लीफ. इसमें क्या है? एयर स्पेसेस हैं, आप देख सकते हो. इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, मतलब इसके सेल के अंदर ग्रीन कलर है. इसके वेन्स हैं जहाँ से वाटर, पानी, लाइट सब जाता है. इसमें गार्ड सेल्स हैं, ठीक है. स्टोमाटा है जिसमें से एयर पास होता है. सो दीज आर द स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द लीफ. तो लीफ का हम सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसके अंदर क्लोरोफिल आता है, लाइट आता है. ओके, दैट वी विल स्टडी. नाउ फर्स्ट इज क्लोरोफिल. इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द लीफ. लीफ में प्रेजेंट होता है इन अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट जो सेल में होता है इन द सेल ऑफ द लीफ, दैट इज ओनली द क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का होता है. ओके. लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करते हैं? उस लाइट को, सन का जो लाइट आता है उसको वो एब्सॉर्ब करता है, अपने अंदर ले लेता है. देन कम्स द कार्बन डाइऑक्साइड. सो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एटमोसफेयर. एटमोसफेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ लेते हैं. थ्रू व्हाट? स्टोमेटा. स्टोमेटा से लेते हैं. सो व्हाट इज अ स्टोमेटा? Picture you can see the stomata. It is generally inside, present inside or underside of the leaves. Okay, stomata एक बार open होता है, एक बार close होता है. When stomata is open, there is enough light and water enter into this, and through the guard cell it swells up. वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, and curve जैसा shape हो जाता है उसका, the opening. So this allows carbon dioxide to enter into the leaves. सो दैट इज़ अ ओपन स्टोमेटा. वो खुल जाते हैं और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाता है. क्लोज स्टोमेटा में क्या है कि स्टोमेटा आर बाउंडेड बाय टू हाफ मून शेप. हाफ मून शेप का होता है, एंड इट इज़ बाय द गार्ड सेल. तो गार्ड सेल क्या करता है यहाँ पे? इट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज जो होता है उसको वो रेगुलेट करता है. जनरली स्टोमेटा एक छोटे छोटे पोर्स है, होल्स है जो लीव्स के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लाइट, ये सब अपने इन्वायरमेंट से वो ले सकता है थ्रू दिस ओपनिंग. सो दैट इज द स्टोमेटा. नाउ लेट अस सी द एम टू फाइंड आउट द लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. क्या लाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए? सो फॉर दैट वी नीड अ ग्रीन प्लांट, ब्लैक पेपर, सीजर एंड क्लिप. तो इसमें क्या करना है? प्लेस द प्लांट इन अ डार्क कॉर्नर ऑफ द रूम फॉर 3 days. 3 दिन के लिए आप रख दो उसको डार्क कोई प्लेस में आपके घर पे. उससे एक पत्ता निकालो, प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, एंड टेस्ट इफ इट फॉर अ स्टार्च टू कन्फर्म वेदर इट इज़ फुल्ली स्टार्च फ्री और नॉट. क्या उसमें स्टार्च है या नहीं है, दैट इज़ द, उसमें स्टार्च है या नहीं, ये हमको कंफर्म करना है, ठीक है. मतलब उसका जो लीफ है वो खाना बना सकते हैं या नहीं बना सकता है. तो कवर अ पार्ट ऑफ द लीफ यूजिंग अ ब्लैक स्ट्रिप ऑफ पेपर. ब्लैक स्ट्रिप ऑफ पेपर से उसको कवर कर दो, ठीक है, एक पार्ट में. देन प्लेस द प्लांट इन सनलाइट. एटलीस्ट 6 hours तक आपको सनलाइट में रखना है. नाउ प्लग द लीफ कवर्ड विथ, और जो जो पत्ते को आपने कवर किया है उसको आपको क्या करना है? निकालना है. आपने जो लीफ को प्लग किया, उठाया, कवर्ड विद दैट ब्लैक स्ट्रिप,
ऑफ पेपर, रिमूव द स्ट्रिप, स्ट्रिप को हटा दो, एंड टेस्ट इट फॉर द स्टार्च, कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। तो स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करते हैं। सो द पोर्शन ऑफ दैट लीफ दैट वॉज कवर्ड शोज नो चेंज, लेकिन when iodine solution is added, no change, the portion of the leaf that was uncovered and turns, जो uncovered था उसका पोर्शन ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया, और जो कवर था वो नहीं चेंज हुआ है आयोडीन सोल्यूशन के बाद भी। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स देयर वाज नो स्टार्च फॉर्मेशन इन द कवर्ड पार्ट, कवर्ड पार्ट में स्टार्च फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, सो इट डिड नॉट टर्न into blue black color. This shows that light is what necessary for photosynthesis. लाइट ज़रूरी है photosynthesis होने के लिए। That means you can tell whether the photosynthesis has occurred or not by testing the starch using the iodine solution. iodine solution को यूज़ करके हम इसको पता लगा सकते हैं। तो देखो ये लीफ में स्टार्च नहीं है, लेकिन दूसरे लीफ में इसका कलर चेंज हो गया है ब्लू ब्लैक, दैट हैविंग द स्टार्च। We have to find that whether carbon dioxide, how carbon dioxide is necessary for photosynthesis, कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको कैसे पता करेंगे। सो अ पॉटेड प्लांट ही हैज़ टेकन अ डाइल्यूटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिए हैं, ओके, देन अ कोनिकल फ्लास्क लिए हैं विद द कॉर्क इन इट, आयोडीन सोल्यूशन लिए हैं और ड्रॉपर लिए हैं। नाउ कीप द पॉटेड प्लांट इनसाइड अ डार्क रूम फॉर फ्यू आवर्स, कुछ टाइम के लिए आप ये प्लांट को आप एक डार्क रूम में रख दो। वाटर इट, ओके, देन पोर द डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन द कोनिकल फ्लास्क। तो इसके साथ जो कोनिकल फ्लास्क लगा हुआ है उसको क्या करो आप, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन उसमें पोर कर दो, डाल दो। जो सोल्यूशन है दैट इज़ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अब्जॉर्ब करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है उसको ये अब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये सोल्यूशन को डाला गया ताकि हम पता कर सके कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़रूरी है। प्लेस वन ऑफ द लीव्स विदाउट ब्रेकिंग इट इनसाइड अ फ्लास्क, ठीक है, एक लीफ डाल दो। नाउ कीप द एंटायर अरेंजमेंट इन सनलाइट, सनलाइट के नीचे अभी रख दो। आफ्टर फ्यू आवर्स टेस्ट द लीफ इन द फ्लास्क and another leaf of the same plant for the starch using the iodine solution, iodine solution को यूज़ करके। ना अब क्या ऑब्जर्व करते हो, आयोडीन सोल्यूशन जब ऐड किया जा रहा है, द लीफ दैट वाज क्लैप्स्ड इनसाइड द कोनिकल, जो कोनिकल फ्लास्क के अंदर था, दैट शो नो चेंज, वेर एज द अदर लीफ टर्न्स व्हाट, ब्लू ब्लैक। दैट मीन्स व्हाट, so what conclusion we draw from this, we draw conclusion that leaf inside जो conical flowers, जो conical flowers के अंदर जो leaf है, that do not carry photosynthesis। क्यों, because there was no carbon dioxide available to it, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल दिया था ताकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड वो सब ले ले, तब भी ना पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। Now let us see the root system. Root system of a plant enables it to obtain from roots से क्या, कैसे roots को obtain होगा, water from the soil। तो root system plants enable them to obtain water from the soil, water जो है soil से लेते हैं। तो root system consists of mainly primary root, rootlet, secondary root, root hair, ओके, ये सब प्रेजेंट रहता है। रूट हेयर का काम क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट, रूट एरिया को बढ़ाना, एंड आर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स, तो बहुत ज़्यादा में मिलता है नियर द टिप ऑफ द रूट। वाटर एंड सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल थ्रू द रूट सिस्टम एंड रीचेस टू द, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द रूट, रूट का ये काम है कि वाटर और न्यूट्रिएंट लेके वो कहाँ तक पहुँचाए, लीव्स तक पहुँचाए, लीव को दे। नाउ water and the nutrient are transported from the roots to the other part of the plant। वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, रूट से लेके सभी प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर जो सो प्लांट के थ्रू जो ट्रांसफ़र हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज द जाइलम, ओके। एंड द शुगर, जो शुगर फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस,
that is transported to the various parts of the plant. So that is called as what? Phloem. सो दो चीज़ है, जाइलम में क्या होता है कि वाटर और न्यूट्रिएंट वो ट्रांसफ़र करता है प्लांट में, और फोलम का काम क्या होता है? टू ट्रांसफर द शुगर टू वेरियस पार्ट्स ऑफ। नाउ कैन यू आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन? नाउ इट इज़ वेरी इजी। कंप्लीट द इक्वेशन। हाउ यू कैन कंप्लीट? पहला डैश में क्या होगा? इट विल बी व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, chlorophyll is there in presence of what? Light. It gives what? Sugar plus oxygen. दूसरा क्वेश्चन क्या है? नेम द रिएक्शन ऑफ दिस प्रोसेस। दिस रिएक्शन का नाम क्या है? शोन इन द अबव। इट इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? इट इज photosynthesis reaction. So what are the four things necessary for this process? photosynthesis के लिए क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल, लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. So I hope this part is understood by you. Next part we will study what? Heterotrophic nutrition. Thank you for watching this video.